हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती है और मैं एक बिगिनर हूँ। मैं इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं रहा मतलब जानती हूँ टूटी-फूटी इंग्लिश जो मैंने शुरू से पढ़ी है स्कूल तक वही। हमारे साथ बारिश है, जो अभी 9 साल के लड़के हैं उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। मुझे उनसे जानना है कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं? मतलब आपने कैसे सीखी इंग्लिश? स्टार्टिंग कहाँ से की? कैसे-कैसे किया आपने? बताइए बारिश। In the starting, first I learned the English by my mom. She told me the some words, basic words, how to spell them or how to tell them and how to write. Well, when I know them that how to know or how to spell them, so then I am given me a test like that the words I have learned. So I tell to ma'am, and now when she have to say that it is correct or wrong. And then after that, when I have completed my basics, so now now that day I have to do on my own. By the YouTube, by the YouTube, I get learning by the English, and then I see some videos that are very different from the related to English, and then I watch. अच्छा, फिर आपने आपने क्लासेस भी तो की होगी बारिश, तो वो कहाँ से की है आपने? In my city. और उसके अलावा आपकी फैमिली में कैसा आपके साथ मतलब बातें फैमिली मेंबर में से पेरेंट्स और रिलेटिव क्या आप इंग्लिश में ही टॉक करते हो? My parents, so sometimes they speak English and tell me that something that it is right or not. And mostly my brother talk and sometimes only 90% he talk in English at home and telling me that word is correct or not. जैसे कि मुझे इंग्लिश सीखना है, उसके लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मेरी एज अब मैं 25 की हूँ, तो मुझे इस वक़्त टाइम मतलब हो गया है, तो मुझे मतलब होता है ना एक सडनली मुझे अब एक जागरूकता हो रही है कि मुझे अब इंग्लिश सीखनी है। शुरू से मैं सीखती थी स्कूल टाइम से, जैसे स्कूलों में सबको ट्रांसलेशन के पढ़ाया जाता था, वैसे मैं करती थी, बट ना आया नहीं, एक टाइम पे बाद मैं भूल जाती थी। अब आप मुझे बताओ मैं कैसे करूँ? First, you have to know the basic words that in the big like and when you know the basic words how to spell or how to write, then you have to make some sentences about related to that. And when you make the sentences, not one then you have to spell it. And when you know the spelling, how to spell it, now you have to become some level of your that. Now you have to not in the break. It's now it have to do that the words that you don't use in your daily life, but it can be in your daily life. So first you have to know the grammar also. देखिए, अब इतनी एज में मुझे इंग्लिश सीखने का है, लेकिन अब मुझे थोड़ी शर्म सी आती है। आपको तो आप एज 9 इयर्स के हो, तो मुझे ये सब कैसे मतलब कि कम करना पड़ेगा? कैसे करूँ मैं? आप कुछ बताइए मुझे। And it is not the responsibility of the age. And it is called state fear. If you have state fear, you have to set it off. Because when you use the stage, you have or don't have a fear. Use the stage confidently, and if someone not, don't see him. Only see that the audience was not laughing and was serious. And then you also become curious and stop on one of the topics that you are talking. Very nice, guys. Do we do one of that? They have to know the basic fungi and then they have to level up and then know the grammar and they have to read some stories and spend the story and about learn. बुक्स वगैरह पढ़ती हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती ये सब करती हूँ फिलहाल। Some after evening we get. यस। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी आई होप बातें समझ आई होगी। थैंक यू।